हाँ भाई, एग्जाम कैसे हुए आप सबके? हाउ वाज द एग्जाम? रिजल्ट आ गया आपका? हैव यू गाइस गॉट द रिजल्ट्स? हु इज द टॉपर? So make sure the screen is visible to you and I'm audible to you. Give me yes in the chat box if it is so, and then we will start the session. Everyone has to respond. Okay. So as you can see on the screen, today's topic is center of mass. Very interesting topic, and we are going to enjoy this topic. ठीक है ना? Okay, currently in your JNV regular classes, which chapter is going on in physics in class 11? This is from rotational dynamics. JNV शिमोगा, लिखिता बिंदु, JNV तिनसुकिया, JNV विजयनगरम, श्रीनिधि. Which chapter is currently going on in your regular JNV classes? Tell me. Is it the same that we are talking to about today? Is it the same center of mass or something else? The law of motion, JNV Shimoga, laws of motion. तिनसुकिया, this chapter is complete. ठीक है, ठीक है. ओके, आई जस्ट वांटेड टू. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके लिखिता, गॉट इट बिंदु. थैंक यू गाइस. सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन. फर्स्टली आई एम सीइंग दैट आई हैव बीन लाइव और नॉट. या.
तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे. In this chapter, in this complete unit, what we have to study: center of mass, the very specific and very useful phenomena in daily life also. Vector product of two vectors, because this is just a recap of vector products because we have completed it in the motion in plane. Okay, I think you guys have completed it in the motion in plane. Okay, so vector product we have completed. I'm assuming that you have completed it. Scalar product, which is dot product and cross product, we have to talk it about. Then rotational kinematics, same as the kinematics equation we have seen in the motion in plane. Same, but in a different physical quantities. We are going to apply that. Okay. Then moment of inertia, rotational dynamics. It is same as the if you have studied about laws of motion. Na? Laws of motion is for what? The dynamics of straight line or motion in plane. The same will be here. Rotational kinematics कैसे generate हुआ that we will discuss in the rotational dynamics. ठीक है? So here we will talk about torque and moment of inertia in the previous one, moment and other things also. ठीक है? Then we will start the rolling motion, and in this motion only we will see the combined rotational and translational motion. Okay, so this is a very huge unit, huge chapter it is. So you have to pay attention till the beginning. First of all, see this image. देखो, there is a very bulky stone, or you can say the part of a mountain is present here in this image. Very heavy marble. But if you will see that this marble is not going anywhere, it is balanced here. How this is possible? कि इतना बड़ा पत्थर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हुआ? इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ? द इमेज इज आल्सो रियल लाइफ इमेज. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस इमेज कि ऐसा हो सकता है? बिंदु लिखिता, तिनसुकिया, विजयनगरम. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद दिस कि ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, इज इट दिस इज पॉसिबल? टेल मी इन द चैट बॉक्स. If you will pay attention to this stone carefully, it is making contact with this another stone here at this particular position. Okay, it is possible because everybody possesses a particular specific point where you can consider the whole mass of the body. Okay, so suppose a body having a 20 kg weight, but it is distributed here and there. So there will be a specific point where you can consider inside the body or outside the body. Okay, at which you can consider the whole 20 kg weight there. So here at this point where this stone is making contact, this is that point, specific point, where the whole mass of this heavy bulky marble you can consider. Okay, and that is why it is in a balanced state. Okay, because the whole mass is balancing by this point, and that particular point is nothing but what is that? Center of mass. As the name suggests, it is the center of mass. Okay. So in center of mass, what we are going to study? Center of mass for a system of particles. First of all, we will see what is the center of mass of two particles, and then for the number of particles. Okay. Then center of mass for a continuous mass distribution, and then motion of the center of mass. Till now, whatever we have studied in the kinematics or Newton laws of motion. So when we talk about there is a block and we have applied a force F on that block, or let's say not the block, we are not showing the force, we are showing that this block is accelerated in this direction, and we write the Newton's second equation F is equals to ma. Then this acceleration that we are writing now, we are writing it for the center of mass. Okay, this acceleration is nothing but the
acceleration of center of mass. Okay, clear? Because in these types of problem, we assume the mass of this block at a single point. Okay, and that point is the center of mass. Now, first of all, we will understand what is the concept of rigid body and deformable bodies. Okay, so concept of rigid body. Let me change the color. Concept of a rigid body. Concept of rigid body. This is a body we have. A rigid body. कोई भी body है. ठीक है. So what will be a rigid body? Suppose I have considered 2 points in this particular object. ठीक है. This is point A. This is point. So if the distance between point A and point B is not changing in any condition. Any condition mean if I just apply the force to this body like this, and like this, if I just suppress the body or expand the body, in both the cases, the distance between these 2 points inside the body, if it is not changing, then that particular body is termed as, then that body is termed as rigid body. Which body? Rigid body. Till now, whatever the body we have considered in kinematics or in Newton laws of motion or any of the chapter that you have seen. Okay. So these types of body are rigid body that we have considering till now. Okay. But in real life, let's say this is a cricket ball. This is a ball. And let's say we mark these 2 points at this ball, point A and point B. When we suppress this ball, what will happen? The ball will squeeze like this. We all know that ball is going to squeeze like this. So now if you will see the distance between point A and B is changed. This is D and let's say this is D dash. So D dash is less than D, which means in daily life, it is not possible to have a rigid body. Okay? Clear? So what these types of body will call in daily life? So daily life में जिन bodies के साथ जिन objects के साथ we engaged with is called the deformable bodies, which can easily deform. ठीक है. So rigid body का आपको ये concept याद रखना है. What is a rigid body? If the distance between any two particular point or specific point on the body is not changing in any condition or by the action of any force or any torque or any type of condition, then that particular body is termed as a rigid body. Clear है? Any kind of doubt? If you have any kind of doubt, you can ask. Generally, we can consider this as a rigid body. Why? Because this is a metal rod and the thickness of the metal rod is also good. So when you try to suppress it, you are not going to suppress it. Otherwise, if you use the hydraulic machine and other machine, you can easily suppress it. But if I talk about myself, I'm not able to squeeze it.
The steel rod, I'm not going to squeeze it. Okay, I'm not able to squeeze it, and none of you, I'm sure about it. So that is why we can consider these types of bodies as a rigid body. Otherwise, although they are not satisfying the condition, but they are just fulfilling the condition. Okay, clear? So these types of body you can see here. One more example is also, if you see the distribution of mass in these three objects. So distribution of mass here is more, because more area, more mass will be there, and in this area, less mass, less area. So unequal distribution of mass is here. If you talk about this, by looking at this, we can say that mass is uniformly distributed, but there are some types of error or defects in the material. So that is why we can consider it to be a unequal distribution of mass. This also. Okay? It doesn't mean कि if a body is symmetric, the distribution of mass is also symmetric on that. Okay? There is a variation of mass density, and there is a presence of defect in the body, which will make the distribution of mass unequal. So remember this point. Okay? Now, here you can see this particular, this is a particular rod, and we hang this rod by a rope. This is a rope and this is a rope. ठीक है? So देखो, पूरी रोड को बांधने की जरूरत नहीं है. We have tied only one end. So what is this point? This point is termed as center of mass of this rod. ठीक है? So सारा का सारा मास कहाँ पे आ गया? यहाँ पे. So total mass will acting downward at this point, and in respect to that, there is a tension develop in the string, which is, ठीक है? Clear है? Now, if you consider this is a particular rigid body, here there are different particles by which this body is made up of, and this is the system boundary. If you consider one of the particle here, which is Mi is a single particle in this particular rigid body. There are several particles, thousand multiples of particles is there. So we are considering only one, which is Mi, ith particle. And let's say the distance between the mith particle and this point G, which is the center of gravity or center of mass, is rho I. Position vector from the origin is r1, and the position vector of center of mass is r. So if you apply the vector law for this, you can see the definition. For a system of particles, center of mass is the point at which all the mass is supposed to be concentrated. ठीक है? जहां पे सारा का सारा मास क्या हो, कंसेंट्रेटेड. ठीक है? देखो इस पेन को देखो, ये पेन भी देखो बैलेंस हो रही है ना इस पॉइंट पे. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पेन बैलेंस हो रही है. यू गेट दिस. सो ये पॉइंट क्या हुआ पेन का? सेंटर ऑफ मास. क्लियर है? अब टू पार्टिकल के लिए क्या करेंगे? देखो हमने दो पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किए हैं, M1 और M1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, M2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर. When you join those two vector, there is a displacement vector of it also. ठीक है ना? Let's say center of mass of these two particle lies in between them. So center of mass का position vector कितना हुआ? RCM vector. We can say that RCM vector is equals to M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2. कैसे लिखेंगे? RCM vector is what? Mass of one particle, position vector of that particle, mass of another particle, position vector of second particle divided by the total mass M1 plus. ठीक है? Similarly, we can write the position vector as RCM vector as XCM I cap, YCM J cap, ZCM K cap. Which means देखो RCM R vector क्या है? पोजिशन वेक्टर है. R vector को we can always write as X I cap, Y J cap, Z K cap. ऐसे ही तो लिखते हैं शुरुआत से. So if you will see here,
RCM vector cube we can write as XCM I cap, YCM J cap, and ZCM K cap. Okay. Now, what is the value of XCM, YCM, ZCM? It you can easily calculate that. There is no worry. देखो, RCM और XCM को मैं कैलकुलेट करने का सीधा तरीका ये है. XCM यू कैन कैलकुलेट बाई M1 X1 प्लस M2 X2, क्योंकि इस पार्टिकल के X1 Y1 कोऑर्डिनेट तो होंगे ना, सिमिलरली इसके भी होंगे X2 Y2. सो M1 X1, M2 Y2, M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, XCM आ जाएगा. Position of center of mass in X direction. YCM is position of center of mass in Y direction, and ZCM is the position of center of mass in Z direction. तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट देने हैं जैसे. ठीक है. नाउ इफ द मास ऑफ बोथ द पार्टिकल आर सेम in this expression, let's say XCM we are calculating, it is M1 X1 plus M2 X2 divided by M1 plus M2. ठीक है. If the mass of the particle are same, M1 is equals to M, then XCM we can write as X1 plus X2 divided by C. And X1 और X2 कहाँ से मेजर करने? ओरिजिन से मेजर करने. ठीक है. और ओरिजिन इज आवर चॉइस. ओरिजिन इज आवर चॉइस. आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो ओरिजिन, बट इट इज बेटर टू चूज ओरिजिन एट वन ऑफ द पार्टिकल. तो उससे क्या होगा? देखो, अगर मैं इसी केस में बात करूं, मैंने ओरिजिन यहाँ पे चूज कर दिया. ठीक है. तो दिस कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट D × 0, एक्स एक्सिस पे ही है. ठीक है. तो इससे देखो क्या होगा, M1 X1, बट X1 is 0, so one of the coordinate will become, one of the thing here will become 0. 0 plus M2 X2, M2 is what? M1 is equals to M2 is equals to M. XCM will become M into X2 is what? D divided by 2M. M1 plus M2 is 2M. M and M will cancel out. D by D. So the center of mass of two same particles is lies in between of the particles. ठीक है ना? D by 2 is the center of mass. Say distance. So for two particles, center of mass lies exactly between them. ठीक है. 3 पार्टिकल के लिए करेंगे तो वही सेम चीजें हैं. तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल और फॉर n पार्टिकल्स, XCM is what? M1 X1 M2 X2 plus M3 X3 divided by M1 plus M2 plus M3, total number of mass particles. ठीक है. तो we can write it as sigma Mi Xi, and I varies from 1 to n, divided by capital M. Capital M is the total mass. ये M1 M2 M2 M3 क्या है? डिफरेंट पार्टिकल्स हैं. सो इन पार्टिकल्स को अगर मैं सम अप कर दूं तो वी आर गेटिंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. सो दिस इज टोटल मास ऑफ सिस्टम. ठीक है. सिमिलर वे में वी कैन राइट इट फॉर एक्स YCM आल्सो एंड ZCM. ठीक है. सिग्मा का मतलब होता है समेशन. सिग्मा मीन्स समेशन, यानी कि जोड़ना. ठीक है.
आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इट विल बिकम m1x1 प्लस सिग्मा मीन्स होता है प्लस आई की वैल्यू 2 पुट करोगे बिकॉज आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो m2x2, 3 पुट करोगे तो m3x3, m4x4, लाइक दिस. नाउ try to solve this question based on the information that we have given in the previous slides. So ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ भाई. Two particle of mass 1 kg and 2 kg are located at x is equals to 0 and x is equals to 3 meter. So यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नहीं है, z कोऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि ycm और zcm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है. फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास. इजी है ना. आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, someone is saying to. Bindu and JNV Shimoga, only two has answered and they are saying. चलो देख, देखो these types of situation is here. X is equals to 0. हमने मास m1 को सिचुएट कर लिया. मास 1 kg is situated at x is equals to 0. 2 kg is situated at x is equals to 3. ठीक है. ठीक है. m2 is 2 kg and situated at x is equals to 3. Now xcm is only will apply m1 x1 plus m2 x2. x1 is 0, so 1 into 0 is 0, plus 2 into 3. 2 into 3 is 6 divided by total mass 1 plus 2, which is 3. So 1 plus 2 is 3. So 6 by 3 is 2 meter. So the answer is 2 meter. Then you can observe one thing here. JNV Warangal, check your answer, check your calculation. Okay, very good. Very good, all of you. Those who have answered. Then one thing to note here is that whatever the particle is heavy, okay, whichever the particle is heavy, center of mass attracted towards this particle. तो देख, यहाँ ये x इज इक्वल टू 0 पे है, फिर x इज इक्वल टू 1 आया होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद. सो अगर आप इस पार्टिकल से इसकी डिस्टेंस देखें तो ओनली 1 मीटर, बट इफ यू सी फ्रॉम अ लाइटर पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास इज एट 2 मीटर, which means center of mass inclined towards the heavier mass. तो इसे लिख लो आप बात को, center of mass attracted towards higher mass particle or object. ठीक है. अभी इसी क्वेश्चन में इफ आई टेक इट एज 3 और लेट से 4 केजी, m2 को 4 केजी ले लो, xcm will become what, 1 into 0, 4 into 3 divided by 1 plus 4. It is 12 divided by 5, which is 2.4. ठीक है. Clear? I think I have made some mistake here. अच्छा, x is equals to 3 पे है, mass 2 is 4 kg, 4 3 is 12, 1 plus 4 is 5. हाँ, 5 is this 4 3 is 12, 1 plus 4 is 5, 5 to the 10, point 24, 2.4 meter. 2.4 मीटर आएगा ना. ठीक है. हाँ, अगर मैं मास को 5 केजी कर दूं तो
तब मेरा सेंटर ऑफ मास क्या रहा है देखो जरा, 0 प्लस 5 kg अगर मैं करूंगा तो 5 × 3 = 15, 5 + 1 = 6, 15/6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो इट इज कमिंग एज 2.5। तो देखो पहले सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पे था, ठीक है, 2 मीटर, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं मास को हैवी करता जा रहा हूँ, दूसरे मास को मैंने पहले 4 kg किया, तो ये हो गया 2.5 मीटर, यानी सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया 2.4 पे। मैंने और हैवी कर दिया, 5 kg का मास ले लिया, तो ये 2.5 पे ही आ गया, 2.5। तो हो रहा है ना शिफ्ट, जैसे जैसे मैं हेवियर मास बढ़ाता जाऊंगा, मास को और हैवी करता जाऊंगा, दो मास पार्टिकल में वन ऑफ द पार्टिकल इज गेटिंग हैवी एंड हैवी, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट पार्टिकल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू जस्ट नोट इट। नाउ अगेन ट्राई टू solve this question. A system consists of three particles, each of mass m, located at point 1, 1, 2, 2, and 3, 3. What will be the coordinate of the center of mass? बताओ, यहाँ पे तीन पार्टिकल हैं और तीन आपको दिए हुई है उनके लोकेशन एक्स और वाई, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, तो जेड कोऑर्डिनेट विल बिकम 0, जेड सी एम विल बिकम 0। एनी आइडिया गाइस इन दिस? चलो सोल्व करते हैं फिर। देखो इस तरह से ये पार्टिकल अरेंज है, 1, 1, 2, 2 एंड 3, ठीक है, थ्री मास पार्टिकल और ईच ऑफ देम हैविंग मास है। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सीएम को कैसे लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जितने भी पार्टिकल है उतने बार m1 x1 आएगा, ठीक है, mi xi है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, सेम गोज फॉर द ycm। now put the value, mass is same, so it will become like this. You just have to put the coordinate, x1 is 1, x2 is 2, x3 is 3. Similarly for y1 is also same. So if you will calculate here, 1 plus 2 plus 3 divided by 3, 1 plus 2 plus 3 divided by 3. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6. 6 by 3, 6 by 3, coming out as 2 into, ठीक है, क्लियर है? नाउ दिस वन, three particles of mass 3 kg, 1 kg, and 2 kg are placed at the corner A, B, and C, respectively, of an equilateral triangle ABC. और उसकी एज कितनी है, 1 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टाइसिस ए। ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। दोनों तीनों चार्ज पार्टिकल वर्टाइसिस पे, मैंने एक्सिस इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि दो पार्टिकल तो एक्सिस पे ही आ गए, वन पार्टिकल इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। ओरिजिन मैंने कंसिडर कर लिया एक मास पार्टिकल पर। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यू हैव टू कंसिडर द ओरिजिन एट वन ऑफ द मास पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटर ऑफ मास बनेंगे, एक्स सी एम और वाई सी एम। एक्स सी एम अगर आप कैलकुलेट करोगे, so you will write as m1 x1, m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3, ठीक है। नाउ x1 you can easily put 0,
x2 you can easily put 1, but what you will put at x3? Or it has, in the question it has converted at taking is at m2, so what you will put at the place of x2? So for that you need to know the coordinate of it. So you can apply the Pythagoras theorem also, and you can just resolve this length. So this is 1 meter, like this. Only this portion I have taken. This will become 1/2. This length is 1 meter. This angle is 60 degrees. So this component will become what? Let's say this component is A, this component is, so A will become 1 sine theta or 1 sine 60, which is √3/2. And B will become what? 1 cos theta, यानी कि 1 cos 60, which is 1/2. So it is written 1/2 is the x coordinate, this one, and 3/2 is this length. ठीक है? Now calculate it. Easily. x1 is 1, x2 is half, x3 is 0, y1 is 0, y2 is √3/2, and y3 is 0. कैसे? देखो, y1 m1 हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो y1 is 0, y2 is √3/2, and y3 is again 0. x1 is 1, x2 is 1/2, and x3 is 0. तो यहाँ पे ये तीनों कंसिडर कर लिए. Now only you need to put the value in the center of mass equation. Mass is also given to you. Mass is given to you 3 kg, 1 kg, 2 kg. When you put the value here, you will get xcm as 1/3 and ycm as √3/6. Now you have to tell what is the distance from center of mass from vertex C. वर्टेक्स से कहाँ पे है? यहाँ पे. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया? 1/3, यानी कि यहाँ पे ये 1/2 है. ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट 1/2 है, यानी कि यहाँ पे कहीं है. ठीक है, वहां से 2 पॉइंट की डिस्टेंस 0 0, 1/3 √3/6. तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए. x1 y1 इज व्हाट? 0 0. x2 y2 इज व्हाट? 1/3 √3/6. तो 2 पॉइंट आपको गिवन है. इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. ठीक है, या लिखिता, एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर हैविंग? ठीक है, तो एनीवन एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? नाउ we will see the center of mass for continuous mass distribution. अभी तक this is same. देखो, till now what we have discussed, we are discussing point by point. So when we are discussing, this is m1 and this is m2. So m1 और m2 के बीच में there is no other particle. But what happen if m1 and m2 are very close to each other? And then m3 is also very close, m4 is also very close, m5 is also very close. So in this types of situation, this mass is not discrete. This mass is said as continuous distribution of mass. So continuous distribution of mass we see in our daily life. अपना हाथ देखो आप, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है. each and every point, कोई जगह वैकेंट तो नहीं है ना. This is also an example of continuous mass distribution. आपके हाथ में जो पेन है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. हर जगह पे मास है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वैकेंट बना हुआ है. ठीक है, एवरीथिंग दैट यू विल सी इन द डेली लाइफ, दिस इज अ चार्जर. तो इस पे भी आप देखोगे तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कहीं से भी वैकेंट नहीं है. These all are the examples of continuous mass distribution. ठीक है, so suppose we have considered this object as a continuous mass, and इसका मास कितना है? कैपिटल M है.
तो हम यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू एनालाइज करेंगे दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन. So इसके लिए what we will do, we will consider a very small mass dm and we will integrate it over the entire area or entire volume of this particular mass. ठीक है. तो देखो RCM vector will become what? Integration of RDM divided by integration of d. ये कैसे आया? देखो पहले RCM वेक्टर क्या था? M1 R1 वेक्टर, और we can say sigma I is equals to 1 to n mi ri vector divided by sigma I is equals to 1 to n mi. ठीक है. Now this sigma you can apply for the discrete mass, but we want to calculate it for continuous mass. So continuous mass के लिए जो separation होता है उनके बीच में, that is very close. So उसके लिए we will apply the integration. So when you integrate it, RCM vector will become what? Integration of R dm vector divided by integration of dm. R vector तो फिक्स रहेगा ना, R वेक्टर को इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे. मास है जिसे इंटीग्रेट होना, कंप्लीट मास. नहीं. सो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द सिस्टम. सो कंपोनेंट फॉर्म में अगेन यू कैन राइट इट एज एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम. सो आरसीएम को यू कैन राइट एक्स वाई जेड. ठीक है. ठीक है. एक्ससीएम को यू कैन कैलकुलेट एट 1 अपॉन कैपिटल जेड. ठीक है. चलो अब देखो ये हम क्वेश्चन करेंगे. इससे पहले मैं एक पोल लॉन्च कर देता हूँ. You just have to answer in this poll. I'm waiting for your responses. Answer in this poll. Meanwhile, we will see this expression. So एक रोड है हमारे पास, लेंथ उसकी कैपिटल एल है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर इज नो सेपरेशन इन बिटवीन द रोड. सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो मास कहाँ से कहाँ तक है? x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू l तक डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. तो कोई भी सिंगल मास पार्टिकल यहाँ पे नहीं है. ठीक है. जो जो भी आप, the student who is participated in the poll, write yes in the chat box. Who has participated, who has responded in the poll, write yes in the chat box. Meanwhile I am solving this question. So first of all we consider a very small section of this mass or of this road of dx length. तो अगर लेंथ बहुत कम है तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास भी बहुत कम होगा, dm मास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन से इस पर्टिकुलर मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास डिसाइड करें. सो एक्ससीएम, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सिस में है? एक्स एक्स एक्सिस में. तो सारा का सारा मास एक्स एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वी ओनली विल सी एक्ससीएम कोऑर्डिनेट. सो इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम इंटीग्रेशन ऑफ डी. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ द रोड, एंड टोटल मास ऑफ द रोड इज कैपिटल. अब देखो यहाँ पे काम आएगी मास डेंसिटीज. तो ये क्या है? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरी एक्सिस तो इन्वॉल्व नहीं हो रही ना, इसलिए ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे बोलते हैं, लेमडा को क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी. डेंसिटी लेमडा इज गिवन बाय मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. अब देखो अगर एंटायर एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? 1 यूनिट का मास कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ? m बाई कैपिटल एल. सो व्हाट इज द मास ऑफ dx लेंथ? m बाई l इंटू dx. ठीक है. सो dx लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास कितना हुआ? m बाई l इंटू dx. So we can write dm as lambda into dx. When you put the value here in this expression,
तो डीएम मास पे क्या होगा देखो, एंटायर लेंथ एल पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी एम, कैपिटल एम, एंड यू कैन रिवर्स इट, कैपिटल एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ पर, so one mass is distributed on L by M, dm mass will distributed on M by L into d, ऐसे भी कर सकते हैं, और you can write in terms of dx also that I have shown in the previous this one, ठीक है। तो dx लेंथ पे कितना मास है, M by L into dx, क्लियर। तो dm by dx is nothing but lambda, lambda की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे, lambda is M by L, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, M by L into dx, same that we have seen. So dm is equals to lambda into dx. When we put this value in this expression, integration of x df divided by capital M. This integration is only for the upper numerator side. So dm की वैल्यू पुट करेंगे lambda dx. Lambda is constant, so lambda बाहर आ जाएगा. Integration of 0 to L x dx. मैंने आपको बताया हुआ है. Integration of x dx is what? x square by 2. अब देखो मैं मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स की यूनिट कैसे रखी जाएगी, so mass is starting from here and end at c, so mass is starting at x is equals to 0 and ending at x is equals to L, so limit would be 0 to capital L. When you put the limit here, you get xcm as L by 2 and ycm zcm are 0, so center of mass of this rod is at the halfway of the L by 2, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द, क्लियर है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई ज्योमेट्रीज है, ठीक है, और इन पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पे होगा, इनके जियोमेट्रिकल सेंटर। इसका जियोमेट्रिकल सेंटर ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो व्हेन यू ड्रॉ द डायगोनल एट द पॉइंट वेयर डायगोनल इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास ये होगा, सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, if anyone has any kind of doubt till here, you can ask right me now. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive. Okay. Any kind of doubt, guys, you can ask.